सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोई, कह कबीर सेवा बिना सेवक कबहू ना होई। सेवक सेवा में रहे, अनत कहूँ नहीं जाई। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझाए। सेवा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निस्वार्थ भाव से की गई सेवा। निस्वार्थ का अर्थ है अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतों और इच्छाओं का ख्याल रखना। संत महात्माओं ने समझाया है कि जो कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाए वो सेवा है। ये कार्य सेवा तभी है यदि इसमें किसी तरह का हिसाब किताब, मुआवजे की चाह, आशा, यहां तक कि तारीफ या प्रशंसा की चाह भी ना हो। खुद को समर्पित करना सेवा है। इसकी कोई हद नहीं होती। ये किसी संस्था की सेवा तक ही सीमित नहीं। सेवा कहीं भी किसी भी समय किसी के लिए भी की जा सकती है। यह अपनी इच्छा से खुद को समर्पित कर देने का ऐसा तरीका है जो असल में जीने का ढंग बन जाता है। संतों ने समझाया है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा उसी तरह है जिस तरह माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। वो दिन के 24 घंटे अपने बच्चे की शारीरिक मानसिक ज़रूरतों को पूरा करती है और उसकी भावनाओं का भी ध्यान रखती है। वो बच्चे की खुशी को अपनी खुशी से ज़्यादा महत्व देती है। वो कभी भी ये हिसाब नहीं रखती कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। वो जो भी करती है बच्चे के लिए अपने असीम प्यार में आकर करती है। सच्चे दिल से बिना किसी आशा के सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए की गई इस सेवा को संत निष्काम सेवा कहते हैं। सेवा दो तरह की होती है। बाहर की सेवा जो कि एक जरिया है, और दूसरी अंतर की सेवा जो लक्ष्य है, जो असल सेवा है। रूहानी मार्ग के संत महात्मा हमें समझाते हैं कि सबसे उच्च कोटि की निष्काम सेवा भजन सिमरन है, जो अपनी चेतना या सुरत को समेट कर आंखों के बीच में इकट्ठा करना, टिकाना और अंतर में दिव्य प्रकाश और धुन से जोड़ना, यही सच्ची सेवा है। यही सबसे उच्च कोटि की सेवा है। गुरमुखां दी सेवा तो मतलब उन्हां दे दस्से होए उपदेश उत्ते चलना है। सिमरन और ध्यान दे जरिए नवां दवारियां चो ख्याल कढ़ के अखां पिछे लिया के शब्द दे नाल जोड़ना है। जींदे जी मरो अगर मालिक नाल प्यार पाउणा है, सतगुरां दी सेवा है। जींदे जी मरना कि सिमरन और ध्यान दे जरिए नवां दवारियां चो ख्याल कढ़ के अखां पिछे लिया के अंदर शब्द दे नाल जोड़ो, ये सतगुरां दी असली सेवा है। इस सेवा के जरिए असी सतगुरां की खुशी हासिल करते हाँ और अपना फायदा करते हाँ। फायदा साडा होना है, खुशी असी सतगुरां की हासिल करते हाँ। इस निस्वार्थ सेवा के जरिए शिष्य मालिक के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। इससे शिष्य को अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने में मदद मिलती है और मालिक की दया मेहर को ग्रहण करने की उसकी ताकत बढ़ती है। इस तरह से
उसे मालिक के अनंत प्रेम का गहरा एहसास होता है। इस सेवा के जरिए ही शिष्य खुद की पहचान करने के योग्य बनता है और परम सत्य का अनुभव कर पाता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए। यही सच्ची सेवा है, सच्चा आत्मसमर्पण है, जिससे इंसान नाम के रंग में रंगा जाता है। इस सेवा के जरिए ही शिष्य उस मकाम तक पहुंचता है जहां उसे परमात्मा के अलावा और किसी भी चीज की चाह नहीं रहती और वो अपनी हस्ती को खोकर कुल मालिक में लीन होने के लायक बन जाता है। जो सेवक यह उच्च कोटि की सेवा करते हैं उन्हें संत सद्गुरुओं ने मालिक के सच्चे सेवक या सच्चे भक्त कहा है। हुजूर महाराज जी समझाते हैं, You see, the real seva is meditation. Seva to ourself, helping the soul to get released from the clutches of the mind, to help the soul to go beyond the realm of mind and maya. That's the real seva. Other sevas are means to achieve this end. You want to be humble, you want to clean your vessel, you want to create humility within yourself, you want to be useful, you want to have a very compassionate heart, loving heart, cooperative heart, so that you may invoke the grace of the Lord in your meditation. These are all means to achieve the end. The real seva is attending to your meditation. भजन सिमरन के लिए चूंकि लगातार एकाग्रता की आवश्यकता है, इसलिए सही रूहानी माहौल बनाने के लिए बाहर की सेवा जरूरी है। बाहर की सेवा शिष्य के मन में विनम्रता लाती है और उसे सद्गुरु के करीब रखती है। ये शिष्य को और अधिक भजन सिमरन के लिए प्रेरित करती है। वो जितना अधिक भजन सिमरन करता है, अपने अंदर उतना ही आभार महसूस करता है, उतना ही विनम्र होता है और उतनी ही ज्यादा बाहर की सेवा और अंदर की सेवा करना चाहता है। Other sevas are just to clean a cup so that we may be able to fill it with that nectar within. If the cup is dirty, it's not worthy to be filled. Because if the humility is not within us, we cannot taste that nectar within us. If we are attached to the wealth, we cannot taste that nectar within us. If our mind is consciousness is separated from the whole creation, we cannot taste that nectar within ourselves. When we are able to achieve all those three sevas, then only we are fortunate enough to taste that nectar within ourselves. Then our cup is full. पूर्ण संत किसी खास रूहानी मकसद से इस धरती पर आते हैं। वे जीवों पर दया करके उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। वे अपने करुणामय स्वभाव के कारण दुखी आत्माओं को जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने के लिए आते हैं। रूहानियत की महक लोगों को बड़ी तादाद में संतों की संगत में आने के लिए आकर्षित करती है। इसलिए संगत की सुविधा के लिए कई प्रबंध करने पड़ते हैं। जब जिज्ञासुओं की संख्या हजारों और लाखों की तादाद में बढ़ जाती है, तब सेवादार अनगिनत कार्यों की जिम्मेदारी संभालते हैं, सद्गुरु के रूहानी मकसद को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। ये सद्गुरु के सेवादार हैं
ये हर सेवादार का भक्ति भाव और उसकी सेवा की भावना है, जिसके जरिए सद्गुरु उनमें आध्यात्मिक बदलाव लाने में सफल होते हैं। Seva is a gift from the Master, and it helps us in so many ways on the path. It keeps us in his environment, and it helps us to forget ourselves. We think of others, we serve the Master, and helps us in our meditation. Seva is a drop in the ocean of love and help that God and your teacher gives you during your life. That is Seva. Seva actually is the elixir that makes the tree of love grows in your heart. That is Seva. Because love is the ultimate goal. Love is God and God is love. Babaji briefed me that any seva given to you is not of a chair that you are going to occupy. The seva or the sheds or anything, any infrastructure, seva is of the Sangat. If the Sangat is happy with you, I am happy with you. Otherwise, there is no idea of doing seva, leaving your house, coming here. And if my Sangat is not looked after by you, I will not be happy with your seva. I think seva is pretty much anything that you do without the I factor or without expectation of any return. Selfless service and nishkam service that he talks about in satsang all the time. So it could be anything from helping someone cross the street to helping someone pack a bag groceries or looking after a little child if need be. It doesn't have to be within the institution of RSSB, but anything that you do wholeheartedly and openly to help others is seva. Somebody asked Babaji, you've always said that the most important seva is your meditation seva. What is the second most important seva? And Babaji said, seva towards your parents. And I remember Hazur's words as well. He said, we don't have the tongue to thank our parents, what they've done for us. They've raised us. We were there as parents for the children when they took their first steps. Why can't the children be there for us when we take our last steps? Seva to me is a rare opportunity to forget ourselves. It is the chance to lose yourself in the service of others, and especially on this path because you are, and I'm almost afraid to say this, but you are really not serving the Master, but you are serving his biggest treasured jewel, which is his Sangat. Seva is the cornerstone of my life. It's the thing I relish and enjoy doing most of all, because it's a very practical way of bringing the Master and the path into your life. If you have that way of looking at things, that everything is given by him, when you're doing seva, that makes it absolutely real to you because he has given you this seva to do. So you do it with all your heart, with all your love that you can muster because you know it's for him. For me, I think seva is my anchor. It is what holds me steady and reminds me that the Master is always with me in every situation. It's what keeps me going through all the ups and downs that come before us in life. And I think I really wouldn't know what to do if I didn't have seva. So I think in one word, that's really it. It's my anchor. It's aside from the Master himself and the Naam that he has gifted me with, seva is the anchor that holds me on the other side. So it's kind of like a balance. And seva is my deep gratitude to my Master for all his blessings. On a lighter note, seva keeps us out of mischief. सेवा की शुरुआत 1891 में हुई,
जब बाबा जैमल सिंह जी डेरे में आकर रहने लगे। शुरू शुरू में सत्संग में आने वाली संगत के लिए केवल लंगर बनाया और परोसा जाता था, पर जब संगत बढ़ने लगी तब सत्संग हॉल और रहने की सुविधाओं की जरूरत पड़ी। इसीलिए अपने सतगुरु के प्रति असीम प्रेम के कारण संगत ने इन इमारतों को बनाने में हर तरह से मदद की। बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि सेवादार की छोटी से छोटी कोशिश भी उनके लिए बेहद कीमती है। सेवादारों का हर पल, पसीने की हर बूंद जो सेवादारों ने बहाई है, वो उनके लिए कीमती है। During Baba Sawan Singh's time, Seva in Dera took a different form. In Dera, we didn't have any boundary wall at that time, so it was open from all sides. So a lot of disturbance was there. The people were coming in tongas only. At that time, there were no transport system. So they were haphazardly keeping their tongas and horses wherever they liked to. They'll tie their horses and keep it. So Maharaj Sawan Singh, he started what is called as Sawan League, in which Maharaj Charan Singh at that time, they were all youngsters at that time. So he was made the chairman or president of the league, and there were others. The interesting thing they told me was that whatever seva at that time was given by Babaji to these youngsters, so in their actual life when they started working, they went into the same fields. Maharaj Charan Singh, he became Maharaji here. Dharbani became transport in charge here as well, and service he was in transport department. G.S. Randhir, he was in public relations. And Bhandari, of course, was looking after our langar. Somebody was given to look after, let there be no dogs to shoo them off. So that became security part. Later on, during Maharaji's time, the Sangat increase was manifold. So it came into lakhs at that time. Earlier on, there were no sheds. So everywhere they used to put shamiyanas. Now, one kanat of shamiyanas is 18 feet by 36 feet. So in an acre, you can work out how many kanats were joined together. They had a system, there were holes in it, there were poles, they will just put the knobs into it, and then big ropes and all those types of things. It's a thing to be seen, how they used to do it. So when you are trying to make pandal for satsang, they used to work for 2-3 days and night to put up those shamiyanas. And they'll again roll it up after satsang as quick as possible. So within 2-3 days, nothing is there again, it's all clean up. In Maharaji's time, the July satsang, invariably there was rain. And everybody used to come fully drenched. Nobody left the place, but during Babaji's time, we started to have shed. Now you see it's, I think, 38 acres. So now everywhere sheds are coming up. But still Sangat is more. They still have to pitch shamiyanas for that. So they are doing it that. मिट्टी की सेवा डेरे के इतिहास में एक बहुत ही यादगार सेवा रही है। इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी, जब अलग अलग बैकग्राउंड से आए सेवादारों ने एकजुट होकर सिर पर मिट्टी की टोकरियां उठाईं और गहरी खाइयों को भरने का कार्य शुरू किया। मिट्टी की सेवा का मकसद जमीन को समतल करना था, ताकि लंगर, सत्संग शेड तथा बाकी सुविधाओं के लिए जगह बनाई जा सके। लगभग हर वो व्यक्ति जो डेरे में आता, प्रेम प्यार से की जाने वाली इस सेवा का हिस्सा बनना चाहता था। कई बार तो लाखों की तादाद में सेवादार इस सेवा में शामिल होते थे।
आज करीब 60 साल के बाद भी हम आपसी सहयोग से भरे उस जोशीले माहौल को याद करते हैं जिसने इस सेवा को यादगार बना दिया है। I mean, in Huzoor's time, the thing that everyone remembers is Mitti Seva, which is sort of the classic case, of sort of the best symbol of Seva, generally, where you're carrying dirt on your head and you're carrying with everyone else, you're getting equally dirty, and the only difference is some are stronger physically and some are weaker. But and you're all doing it under Master's watchful eyes. He's up on a slight height, watching everyone, and the sun is going down. It's glorious. This is the kind of thing we experienced under Huzoor. एक बार की बात है, जब मैं भोजन भंडार में था, तो जैसे मिट्टी की सेवा में जाते हैं सभी लोग, जब तक महाराज जी बैठे रहते थे ना, तो पता नहीं लगता था कि टोकरी भार है कि नहीं है। जब ही उठ गए तो अगर हमारे को 10 फुट भी आगे जाना है तो वो भारी लगते थे, और जब तक वो बैठे रहे तो पता ही नहीं चलता था। तो इसको आप क्या समझें, वो आप जाने या वो मालिक जाने। तो सेवा वही जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, जो कराने वाला है वही जानता है। सौ साल से भी अधिक अरसे से सेवादारों ने ब्यास के संत सद्गुरुओं के मार्गदर्शन में सेवा की है। उन्होंने ज़मीन को समतल किया है, सड़कें बनाई हैं और लगातार बढ़ती हुई संगत की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा बनाया है। संतों के उच्च कोटि के प्रेम और सेवादारों के भक्ति भाव के द्वारा धीरे धीरे डेरा एक आनंदमय आध्यात्मिक केंद्र बन गया है, जो साल दर साल आने वाले लाखों लोगों की सेवा करने में समर्थ है। Seva comes from heart. It's not a compulsion with anybody. Not that you have to do it, but you want to do it. It must come from within. And there must be love in doing seva. There should be no obligation that you have to do it. Seva is always done with love and humility. Humility is a part of love. There is more happiness in giving than taking, more happiness in donating than accepting any gift, more happiness in helping somebody than getting a help from anybody. People have a wrong concept that they become more happy when they accept in something in charity or accept something in help. The pleasure that you get by helping somebody, making somebody happy in life, nothing to compare with that pleasure. You have certain satisfaction within yourself that you have been able to do something good for somebody. So seva is always done with love. Otherwise it's not a seva. Seva is not mechanically working with hand. Seva is our intention to please another person, to do something for another person so that the other person may become happy what I am doing. So it means there is certain love within us for the other institution, for the other person, for which we are doing something. Automatically there will be humility. Humility is the part of love. Love is the part of seva. सेवा की सारी गतिविधियां सत्संग से ही जुड़ी हैं। सत्संग ही वो जरिया है जिसके द्वारा सद्गुरु संतों की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। यही कारण है कि हजारों सेवादार बिना किसी थकावट के दिन रात सेवा करते हैं।
पूरे साल सद्गुरु नियमित रूप से डेरे में सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। बीच में आप देश और विदेश के लंबे दौरों पर जाकर सत्संग करते हैं और सवाल जवाब के कार्यक्रम भी करते हैं। हर सत्संग कार्यक्रम में आने वाली संगत के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे रहने के लिए, खाने पीने के लिए, चिकित्सा, भीड़ नियंत्रण, यातायात की सहूलियत, सफाई, पार्किंग, सिक्योरिटी, बच्चों की देखभाल और नामदान से पहले के इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी की जाती है। डेरे में लगभग 7,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 1,500 सेवादार पूरा साल अपना सारा समय संगत की सेवा में लगाते हैं। निर्धारित सत्संगों के दौरान डेरे की जनसंख्या बढ़कर 5 लाख तक पहुंच जाती है। इन दिनों में आसपास के राज्यों से हजारों सेवादार संगत की सेवा करने पहुंचते हैं। इन्हें जत्था सेवादार कहा जाता है। पूरे साल डेरे को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेवा के प्रति इनकी निष्ठा जरूरी है। उनकी मौजूदगी लगातार छलक रही श्रद्धा है जो उनकी सेवा के रूप में नजर आती है। उनका जोश और उत्साह डेरे के पूरे माहौल पर छा जाता है। साल में लगभग 5 लाख जत्था सेवादार डेरे में सेवा करने आते हैं। वे यहाँ के हर विभाग में हाथ बटाते हैं, चाहे वो डेरे के खेतों में काम करना हो, लंगर में खाना बनाना हो, सड़कों का काम हो, सफाई हो, निर्माण कार्य हो, बागबानी हो या फिर भीड़ पर नियंत्रण रखना हो। दुनिया भर में ये सेवादार खुशी से सेवा करने को तैयार रहते हैं, चाहे दिन हो या रात, गर्मी की तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड हो। सेवा चाहे झाड़ियों को सही ढंग से काटने की हो, पार्किंग में गाड़ियों को लाइन से लगाने की हो या सड़क पर गिरे हर पत्ते को उठाने की हो। हर सेवादार की एक ही ख्वाहिश है, अपने प्रियतम को खुश करना। सेवा करते करते ये सेवादार अपने आप को पूरी तरह से भुला देते हैं और एकजुट होकर प्रेम और मेल जोल के साथ सतगुरु और उनकी संगत की सेवा करते हैं। That is a lesson, an ongoing lesson that is being taught, I believe, every day. What it means is, I believe, it's being able to understand that we can never do a task alone. It takes a team cooperating fully with one another in loving harmony, and then the project will come out very nicely. The end product will be very well. It also means not putting one's own self forward and realizing that we are doing it for a higher purpose. जैसे ही सत्संग कार्यक्रम की तारीखें घोषित की जाती हैं, मन में उत्साह और उम्मीद जगने लगती है। सत्संग कार्यक्रम की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। सेवादार नियमित रूप से मिलकर छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखते हुए काफी विस्तार से सलाह मशवरा करते हैं और योजनाएं बनाते हैं ताकि आने वाली संगत का दिल से स्वागत कर सकें और अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर सकें। यह बेडफोर्ड यूके में स्थित हेन्स पार्क है। यहां सेवादार सद्गुरु के निर्धारित सत्संग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं जो 6 हफ्ते में होने वाला है। यहां करीब 20,000 लोगों के आने की उम्मीद है। जिस जगह पर सत्संग होगा वहां पंडाल लगाने के लिए आज यहां लगभग 250 सेवादार इकट्ठे हुए हैं। आज शनिवार का दिन है और ये सेवादार कई महीनों से बेसब्री से इन दिनों का इंतजार कर रहे थे। विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग लेकर
सेवादार ये काम करने के लिए तैयार हैं। So what's involved in the tent seva is that it's firstly been going on for the past 24 years. It started in 1994 when the master wanted satsang to be held at Haynes Park. Nobody had ever designed a structure of this size and complexity. It's 152 meters from the back of the stage to the bookstore, and this way it's 120 meters. And from the floor to the top of the roof, it's 11.5 meters. And the Sevadars have lovingly maintained it. Every weekend they come here, they open the fabric, they clean it, we repair it. We bring in the external company that made the fabric. They come here once a year for 2 days and they help us. They are only contracted to do a certain number of repairs. When they come here, they are so impressed with the Sangat that they are finding other things and saying, but this needs to be repaired and this needs to be, and you're saying, but that's not even in your contract. It doesn't matter. We will do it. And that's the sort of effect that they have when they come here. And it's not just the tent fabric. They see the whole mansion, the grounds, the way that they are treated, the way that they are served food. We are asking them, please have more, have more. And they feel that love and they come here and do so much for us. It's a very complex structure. It's not one where it's about brute force. It's about intelligence, thinking intelligently to put up this very complicated structure, but in a way that's safe. And the external bodies who have been, the Environmental Health Office, the HSE, have all been worried. But when they come here and they see the organisation, that all that concern and anxiety that they have just is gone. Because they can just see there's a sense of control and order, and they feel that. Because you can't manufacture that. It's something that they feel and they see. And because the last inspection that we had, they had lots of questions, but we answered as fast as they were asking, we were answering. And they could see that we knew what we were doing. And people who come externally to observe the seva that we do, they're just mesmerized by just the quietness of everything, and there's no shouting or people being noisy or loudness. There's just a calm serenity, and it just unfolds, and the tent just goes up. And I always say that tent seva is a seva where it happens silently all year. It's erected silently, it's done, and the sevadars go home, and nobody even knows that we were here. And that is the atmosphere of tent seva. It's a very loving, calm atmosphere, and sevadars are naturally attracted to this seva and are looking forward to when we're going to dismantle, and then we start the cleaning process as well. I mean, last year, Babaji came to see us on both sides of the tent, east and west side, and he just says just loving things that fills them with that desire to keep coming. He said, I've got the best team in the world. And when you hear things like that, and just little things, he'll walk on either side of the tent and he'll just say things just to make people laugh, and he's just so loving, and he's said things like, there's a lot of harmony in tent, and you feel that harmony. And there was one year when behind the stage where Babaji comes into the tent, the fabric ripped, and it was a really dangerous rip. And I'm praying, and I'm saying, Babaji, I need you now. Please hold that fabric. Anyway, Master came out of his house, Gamal turned right, Babaji turns left. On his own, he walks up to that point, looks up at it and goes, and then walk back. There have been so many occasions like that where we've needed him, and whether he was on site, off site, doesn't matter. He's always been there. The thing I've learned in Seva is that leave it to the Master. If you keep him in your
mind at all times, from the moment you start your seva to the time it finishes, He'll be with you. ऐसी तैयारियां दूसरे देशों में भी, जैसे वैंकूवर कनाडा में भी की जाती हैं, जहां संगत के बैठने की अधिक जगह बनाने के लिए छोटे शामियाने का इंतजाम किया जाता है। हाल ही में वैंकूवर और पेटलुमा सेंटर्स में एक बहुत बड़ी चुनौती जिसका सामना सेवादारों ने किया, वो था वहां का मौसम। निर्धारित सत्संग से कई महीने पहले लगातार भारी वर्षा होने के कारण ये जगह पर भारी मात्रा में कीचड़ और पानी जमा हो गया। जैसे जैसे सत्संग का दिन नजदीक आता गया, सेवादारों ने दिन रात काम करके जमीन को सुखाया और मिट्टी तथा रेत डालकर उसे समतल किया। बाकी जगहों को लकड़ी के छोटे टुकड़ों और कंकड़ों से भर दिया गया। सत्संग से 2 दिन पहले जब जमीन सूखकर अभी तैयार हुई ही थी कि फिर से ऐसी बारिश हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। उसे सुखाने के लिए एक बार फिर वही सिलसिला शुरू करना पड़ा। यह बड़ी ही निराशाजनक स्थिति थी, पर सेवादारों ने साथ मिलकर इस चुनौती का डटकर सामना किया। सेवा को पूरा करने के लिए सारी रात काम करते हुए हर पल का आनंद उठाया। Night 10 o'clock, plan 10:30, we were trying same thing. It's all His grace. We want to serve you Sangat. And this opportunity will never be. And this one we did it 4th time. And tomorrow we might not be here to have another go. So we enjoy the moment. I mean, you could take here in Petaluma, for example, this weekend. You know, there was the rains, and it looked for a while like they weren't even be able to put the thing on. You know, the disaster had struck. But they didn't lose heart. The master had said it would be all right, so they put faith in that. But that's not enough. You actually have to make it happen in a physical way. And they went ahead and did it. And they found 100, resources to means to sort of solve the problem of this, very difficult mud, the standing water. And they overcame it with courage, actually, courage and determination. Their willingness to work all night, confident that they could do it. It was a beautiful thing. In 2014, when he was here last day, he was going, when he's talking to Sevadar, Babaji, and one guy just said, Babaji, are you happy with our seva? I said, I'm very happy. Maharaj is very happy with all of you. Do not leave seva, don't ask for it. Whatever you get it, do it with love and devotion. सबके साथ मिलजुल कर की गई सेवा में जो आनंद मिलता है, वो सबसे बड़ी खुशी है। जब सेवादार एकजुट होकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो उनके बीच हंसी मजाक, प्रेम और दोस्ती का एक जज्बा नजर आता है। जब यह कार्य हुक्म में रहते हुए निष्काम भाव से किया जाता है, तो एकता और मेलजोल का जो अनोखा एहसास होता है, वो दुनिया के किसी काम में नहीं होता। Well, I think that for working in Petaluma, where it started with nothing, where people didn't know each other and had never done seva, so many people, to see the bonding of the Sangat, the Indian Sangat with the Western Sangat, and just to experience the joy of that seva was, I found it so fulfilling. Yeah, it was the first time anyone had really ever done seva as a group. We had so much fun. What was really great is that the leaders would work. The organizers, the people in charge, they only were organizers, but they were also out there working on the roof, doing the construction. And so there was just this bonding between everyone. He brought us all together as a Sangat and made a lot of friends. Once we got started, Babaji came to visit, and he talked to us about seva. And what he said, which was so beautiful, he said, we're all links in a chain, and one
person, one Sevadar is as important as the next. The person, the manager is as important as the person who is in the kitchen. And if one of the links break, then it all falls apart. One of my favorite memories of Sewa is in the early days, Fayetteville, North Carolina was the first center in North America. So one of the first projects was we had to stabilize a hill. So we planted about, I would say, 100,000 small pine seedlings. And we planted them in August. It was incredibly hot, like in the Punjab. All of us, doctors, lawyers, taxi cab drivers, teachers, people from all walks of life, Western, Indian, we worked all day from sunup to sundown. And at the end of the day, we were very pleased with our Sewa. We looked at the hill. We thought it was beautiful. That night, it rained harder than anyone could ever remember. And all of these little trees were at a puddle at the bottom of the hill. So the next day, we got up, sunrise, and we did it all over again. And it was even better and more wonderful. So every time when I drive by and see those trees, it reminds me of what we can all accomplish together when we work together with love and harmony. I have a saying that I've lived by, and it's not what we're doing, it's who we're being. Because Babaji said, you can take all this away if there's no love and there's no harmony. Even with the garden that we have here. I was walking with Babaji one time and said, major crop that we have here is harmony. We want to grow harmony first. And with his, mercy and grace, he's allowed that. And it's wonderful to see. So I don't think there's any challenges that can't be met with love, patience, and understanding. किसी भी सत्संग कार्यक्रम के शुरू होने से पहले सेवादारों की एक मीटिंग बुलाई जाती है और सभी को सेवा के महत्व के बारे में याद दिलाया जाता है। अपने आपको शांत रखना है। जब वो कुछ होता है मीठी आवाज से उनको मीठी बात से अपनी बात समझा दें। ऐसा अगर ऐसा नहीं ऐसा करें तो ऊपर सामने वाला जिद भी कर रहा है तो अपन शांत रहना है। As also explains in spiritual perspectives, quote, the real lover never bothers whether he receives or not. Love is in giving, not in taking. सेवा विभागों को सही ढंग से चलाने के लिए टीम लीडर नियुक्त किए जाते हैं ताकि वे सेवादारों को सिखा सकें, उनकी निगरानी कर सकें। सेवा में और कॉरपोरेशन में जिस तरीके से पद नियुक्त किए जाते हैं उसमें बहुत अंतर है। मूल अंतर यह है कि यहाँ सभी कार्य बराबर हैं, चाहे किसी की बर्तन साफ करने की सेवा हो या कोई सेवादार इंचार्ज हो। सतगुरु की नज़र में दोनों एक समान हैं। यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा सेवादार नहीं है, सभी सिर्फ सेवादार हैं। टीम लीडर या जत्थेदार सिर्फ अलग अलग तरह की सेवा के नाम हैं। चाहे कोई सेवादार हो या फिर टीम लीडर हो, सबकी समान जिम्मेदारी है कि वो आपस में प्रेम पूर्वक सेवा करें। सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है कि सेवा हमारी सोच में तब्दीली लाती है। कई लोगों के काम करने का तरीका हमसे अलग होता है, पर सेवा में हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम इस बात को नज़रअंदाज करके सबके साथ मिलजुल कर सेवा कर सकते हैं। At one point, he defined a good Sevadar as good Sevadar is a person who can work with everyone, period.
with his seniors, with his juniors, with his colleagues, and do anything. So his line was very clear. A good Sevadar is a person who can work with everyone. There is no high and low on this path. If we start to believe that because we're management, we're something special, it's the biggest trap we can fall into. The lovers of the Lord are the ones that do their seva with simran, meditation, and love of Master. They're the true sevadars. If we try and show that I'm in charge, I'm the one who's calling the shots, it's not possible. We are a team. And it's teamwork that helps us. Because individually, we can do nothing. But teamwork and harmony are what help us. We can move mountains. And the Master likes that. He likes teamwork and harmony. And one has to be a good example. There's no question of trying to be bossy. We all are his sevadars. As a sevadar doing an action, you have to listen and compromise what you might feel. Even if you see this might be a better way to do it, if your in charge has told you you should do it this way, you should do it that way. So I think obedience is a very tough lesson for all of us, but it's the most important one because ultimately that's what we want to do, is be obedient to the Master. It doesn't matter where we're working. It doesn't matter what we're doing. It doesn't matter what seva we're given. It's an opportunity for us to glow. It's an opportunity for us to share with our brothers and sisters, for us to create an atmosphere of love and harmony, because that is all that matters. Nothing else matters but that. The work, he can take it from a stone. We are all working together for one purpose, to make the Master happy. We are all in the same boat, going to one destination. So we have to work side by side, shoulder to shoulder. As long as that feeling is there of love, of service to each other, to help each other, there can be no problem at all. If there is a feelings of superiority or bossing over somebody or showing you see that you're superior to them and your leader, then all these problem arises. And here everybody is a sevadar. Everybody wants to help each other. It's all Lord's grace, nothing else. You see, when one is filled with love and devotion of the Father, all human qualities come in you like a cream on the milk. So when they come for love and devotion for the Father, so naturally no problem can arise. हर सत्संग सेंटर बड़ा हो या छोटा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो आने वाली संगत की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रख सके। मिसाल के तौर पर इंदौर में ट्रेन से उतरते ही सेवादार खड़े होते हैं ताकि संगत को सत्संग स्थल पर जाने वाली बसों की ओर गाइड कर सकें। ट्रेन का स्टेशन हो या सत्संग घर का गेट, जैसे ही थके हारे मुसाफिर किसी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेवादार को देखते हैं तो उन्हें तसल्ली मिलती है कि बस कुछ ही घंटों में वे अपने प्रीतम को देख पाएंगे। किसी भी सत्संग सेंटर में जाना डेरे जाने जैसा है। सत्संग सेंटर चाहे छोटा हो या बड़ा और चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, वहां प्रेम और भक्ति का माहौल एक जैसा होता है। हुजूर महाराज जी समझाते हैं, Wherever there is a sangat, there is a dera. Dera is not a place made of
bricks and mortar and other things, you see. Dera is made of the devotees, of the lovers of the Lord, of the seeker of the Father. That is Dera. Without Sangat, there is no Dera at all. Dera is just your love, your harmony, your affection, your understanding, and your cooperation with each other. That is Dera. भारत के सभी सेंटरों में सत्संग प्रोग्राम के दौरान जहां तक हो सके सत्संग घर में ही संगत के रहने का प्रबंध किया जाता है। आने वाली संगत एकोमोडेशन विभाग में अपना नाम दर्ज करवाती है और उन्हें रहने के लिए जगह दी जाती है। उनका साथ लाया हुआ सामान विभाग में जमा करवाया जाता है, जहां सेवादार उसे सुरक्षित रखते हैं। इन सत्संग सेंटरों में दिन और रात के अधिकतर समय शेड को संगत के रहने की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब इसी शेड को सत्संग के लिए तैयार किया जाता है तो ये एक देखने लायक नज़ारा होता है। सूरज के उगने के साथ ही हजारों की तादाद में लोग तुरंत शेड को खाली कर देते हैं और सेवादार उसे सत्संग के लिए तैयार करने में लग जाते हैं। वे मैदान को साफ करके पार्टीशन लगाते हैं और 2 घंटे से भी कम समय में ही सत्संग पंडाल आने वाली संगत को बैठाने के लिए तैयार हो जाता है। बुजुर्ग और विशेष ज़रूरतों वाली संगत का खास ध्यान रखा जाता है। उनके रहने के लिए खास स्थान निर्धारित किया जाता है, जहां पर हर समय सेवादार मौजूद रहते हैं ताकि उन्हें भोजन खिला सकें, दवा दे सकें, सत्संग ले जा सकें या उनके साथ बातचीत कर सकें। सेवादार बहुत अच्छे रखते हैं हमको, और रात में कभी सोलेट आते हैं तो ले जाते हैं गाड़ी से, और जो भी हम कहते हैं वो सेवा तैयार है हमारे लिए। घर पे सदस्य कभी गुस्सा कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं, ये बोलते हैं ये अपने बच्चे से, अपने पिता से ज़्यादा रखते हैं अच्छे। हमारा सेवा ऐसा है, साफ़ सफाई का सबसे पहले, उसके बाद में लंगर परसना और विकलांगों को ले जाना, बाथरूम संडास ले जाना, और जो भी हो यहाँ तक दवाखाने में भी ले जाते हैं। हमारा बिस्तर ही यहाँ पर ही है, 24 घंटे ही है। आवाज़ आती है संगत को, हम उठ के खड़े हो जाते हैं। एक सेवा जीवन का लक्ष्य है, इंसान का मानव का है, ये बिल्कुल बाबा जी के हुक्म है, सेवा में लगे रहो। ये मालिक की दया, फिर उनको संगत को बोलते हैं और आप आ जाना अगले साल सेवा के लिए। You know, in the Delhi satsang, we have a special needs enclosure. It's in the pandal, and we have about 13,000 people coming, and we seat them in about 25 blocks. It's a huge number. And when it was started, we had set up a call center. We wanted to reach out to each and every elderly, infirm, physically challenged. Our sevadars were doing these calls. And there are instances when these sevadars were silently crying at this end of the line, talking to an elderly person at the other end, because they had not come for satsang for 10 years, some for 15 years, they had not had darshan. And here we were able to create teams who would go and pick and drop such people whose family could not bring them. Then we also have people who come with their families, but then they are handed over to our young guides, young sevadars, who take complete care of them, from taking them on the wheelchair to the pandal inside. They look after them, they're fed over there, escorted to the toilets, then escorted back to the cars or buses after the satsang. You know, the beauty of this seva is that
these young children get to learn a lot. They learn compassion. They learn how to look after the elderly. And they treat the elderly as if they are their own grandparents. So this is a big learning for all of us over there. Not only that, we have gone one step ahead where we have brought the Sangat who is bedridden. They have been brought in ambulances and we have a complete block for stretchers. In the last satsang in Delhi, we had about 100 such people who came on those 3 different days. And they were picked up from home by ambulance, brought there. We have extra medical arrangements made for them. And these young children look after, their attendants are of course there with them with the stretcher cases. But it is a sight to behold. And they are so grateful. There is a case I remember where a daughter was contacted for the mother, and the daughter said that my mother doesn't speak at all. She's in such a bad condition. But now that you've asked, and I asked her, would you like to go for satsang? She nodded vigorously. So, but I cannot bring her because I cannot climb down 3 floors with her. I can't carry her. So the call center people told them, no, we will pick up and we will bring you and your mother. She was overwhelmed. The Sangat gets overwhelmed with such calls and they feel that Babaji has remembered us. They feel that he has called them. आज घड़ी अत पावन भावन राधा स्वामी आए जगत चितावन जिनके ग्रह प्रेम पग तारन तिन जीवन का करे उबारन राधा स्वामी शब्द मनावन सुरत चढ़ी देखा कट चांदन महीनों की तैयारी और उम्मीद के बाद आखिरकार सत्संग का दिन आ ही गया। हॉल के अंदर सेवादार संगत का स्वागत करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि संगत आराम से बैठ सके। विदेशी सत्संग सेंटरों में अपंग लोगों के लिए सेवादार शटल बसों का प्रबंध करते हैं जो उन्हें सत्संग गेट से लेकर हॉल तक ले जा सकें। सभी सेंटरों में सेवा के इच्छुक डॉक्टर्स और नर्सेस इमरजेंसी की हालत में सहायता के लिए तैयार रहते हैं। ऑडियो और वीडियो सेवादार इस बात का ध्यान रखते हैं कि सद्गुरु का सत्संग पूरे हॉल में स्पष्ट सुनाई दे और बड़े स्क्रीनों पर उनकी तस्वीर साफ दिखाई दे। शब्द गाने वाले सेवादार हॉल में एक शांत और भक्ति भाव से पूर्ण माहौल तैयार करते हैं। आवो
सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। अंत में संगत चुपचाप बड़ी उम्मीद के साथ सतगुरु के आने का इंतजार करती है। स्टेज पर उनका आना एक खुशगवार पल है जो सतगुरु और उनकी संगत के लिए बेहद निजी पल है। निर्धारित दिनों में सतगुरु सत्संग करते हैं जो करीब 90 मिनट तक चलता है, और कभी कभी आप सवाल जवाब का कार्यक्रम भी रखते हैं ताकि संतों के उपदेश को विस्तार से समझा सकें। अक्सर आपके उत्तर हास्य से भरपूर होते हैं जिन्हें सुनकर संगत हंस हंस कर लोटपोट हो जाती है और माहौल खुशी से भर जाता है। आपकी मौजूदगी में दुनिया और उसकी तमाम परेशानियां मानो खत्म हो जाती हैं।